हेलो फ्रेंड्स, मोंगोडीबी इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 3, मोंगो सेल्स कमांड। तो यहाँ पर जो मोंगोडीबी में कमांड्स यूज होती है, इनके जो एमसीक्यू है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 20+ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यू है हम विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following relationship uses a reference to describe documents between the connected data? तो इसके ऑप्शन है 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन बी 1-to-many रिलेशनशिप बिटवीन एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन सी 1-to-many रिलेशनशिप विथ डॉक्यूमेंट रेफरेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1-to-many रिलेशनशिप्स विथ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used to avoid the repetition of the data in MongoDB schema? तो इसके ऑप्शन है डी रेफरेंसेस, ऑप्शन बी रेफरेंसेस, ऑप्शन सी कर्सर एंड ऑप्शन डी कलेक्टर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Daldash defines what record to select for read, update and delete operation. तो इसके ऑप्शन ए क्वेरी ऑप्टिमाइजर, ऑप्शन बी क्वेरी सिलेक्टर, ऑप्शन सी अपडेट डेफिनेशंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर डिफाइंस व्हाट रिकॉर्ड्स टू सिलेक्ट फॉर रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Daldash JavaScript shell and the MongoDB language drivers translate between BSON and the language specific document representation. तो इसके ऑप्शन है MongoD, ऑप्शन बी Mongo, ऑप्शन सी JSON एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी Mongo. The Mongo JavaScript shell and the MongoDB language drivers translate between BSON and the language specific document representation. Next question है, Daldash in MongoDB must be UTF-8 valid. तो इसके ऑप्शन है इंटीजर, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी बुलियन एंड ऑप्शन डी डबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इन MongoDB must be UTF-8 valid. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type is used to store ट्रू और फॉल्स वैल्यू? तो इसके ऑप्शन है इनम, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी बुलियन एंड ऑप्शन डी सिंबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुलियन। बुलियन डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसर्ट डेटा इनटू MongoDB कलेक्शन यू नीड टू यूज MongoDB's Daldash मेथड। तो इसके ऑप्शन है सेव, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी कैनॉट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। टू इंसर्ट डेटा इनटू MongoDB कलेक्शन यू नीड टू यूज MongoDB सेव एंड इंसर्ट बोथ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड इज। तो इसके ऑप्शन है db डॉट इंसर्ट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम विद इन पैरेंथेसिस डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी db dot collection underscore name dot insert within parenthesis document, ऑप्शन सी collection name dot insert within parenthesis document and option D db dot collection underscore name dot create within parenthesis document। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी db dot collection name dot insert within parenthesis document. This is the correct syntax for insert command. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. Next question है, underscore ID is dash dash bytes hexadecimal number unique for every document in a collection. इसके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 12। अंडरस्कोर आईडी इज अ 12 bytes hexadecimal number unique for every document in a collection. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
To query data from MongoDB collection, you need to use MongoDB dash method. तो इसके ऑप्शन है सिलेक्ट, ऑप्शन बी फाइंड, ऑप्शन सी शो एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फाइंड। टू क्वेरी डेटा फ्रॉम MongoDB collection, you need to use MongoDB find method. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मेथड विल डिस्प्ले ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ dash way. तो इसके ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन बी नॉन स्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन सी सिंपल एंड ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉन स्ट्रक्चर्ड। फाइंड मेथड विल डिस्प्ले ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ नॉन स्ट्रक्चर्ड वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन अ फॉर्मेटेड वे यू कैन यूज dash मेथड। तो इसके ऑप्शन ए ब्यूटीफाई, ऑप्शन बी सिंपल, ऑप्शन सी प्रेटी एंड ऑप्शन डी यूनिफाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेटी। प्रेटी मेथड इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट इन अ फॉर्मेटेड वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द फाइंड मेथड देयर इज अ फाइंड वन मेथड दैट रिटर्न्स ओनली वन डॉक्यूमेंट। तो इसके ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन बी ट्रू और फॉल्स एंड ऑप्शन डी कैनॉट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। अपार्ट फ्रॉम फाइंड मेथड देयर इज अ फाइंड वन मेथड दैट रिटर्न्स ओनली वन डॉक्यूमेंट। दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपडेट मेथड अपडेट द वैल्यूज इन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इसके ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन बी ट्रू और फॉल्स एंड ऑप्शन डी कैनॉट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। द अपडेट मेथड अपडेट्स द वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MongoDB dash method is used to delete a document from the collection. तो इसके ऑप्शन ए ड्रॉप, ऑप्शन बी रिमूव, ऑप्शन सी डिलीट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिमूव। MongoDB remove method is used to delete a document from the collection. Next question है MongoDB dash is used to create collection. तो इसके ऑप्शन है db dot insert collection within parenthesis name options. ऑप्शन बी db dot create collection within parenthesis name comma options. ऑप्शन सी db dot use collection within parenthesis name comma options. And option D db dot collection within parenthesis name comma options. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी db dot create collection within parenthesis name comma option. It is used to create a collection. Next question है how many options parameter there during create collection. तो इसके ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। देयर आर 4 ऑप्शंस पैरामीटर ड्यूरिंग क्रिएट कलेक्शन। These 4 parameters are capped, auto indexed, size and max. Next question है MongoDB dash is used to drop a collection from a database. तो इसके ऑप्शन ए db dot drop collection, ऑप्शन बी db dot collection dot delete, ऑप्शन सी db dot collection dot drop एंड ऑप्शन डी db dot delete collection. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी db dot collection dot drop. This command is used to drop a collection from the database. Next question है a dash is grouping of MongoDB document. तो इसके ऑप्शन ए database, ऑप्शन बी नोड, ऑप्शन सी कलेक्शन एंड ऑप्शन डी टेबल. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कलेक्शन. अ कलेक्शन इज अ ग्रुपिंग ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉप मेथड विल रिटर्न डैश डैश इफ द सिलेक्टेड कलेक्शन इज ड्रॉप्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज इट विल रिटर्न डैश डैश. तो इसके ऑप्शन ए ट्रू ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन सी ट्रू फॉल्स एंड ऑप्शन डी फॉल्स ट्रू. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रू फॉल्स. ड्रॉप मेथड विल रिटर्न ट्रू if the selected collection is dropped successfully,
अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.